बेसिक ईमेल एटिकेट्स। ठीक है, अब ये कुछ बेसिक टिप्स के बारे में हम जानने जा रहे हैं. दीज आर नॉट like hard and fast rules, but yes, if you do this, you may be expected, yeah, like you will be considered a good email user. First point, limit the number of copies. Double check audience. Salutation में एड्रेस नहीं किया किसी को और ऊपर 2 में 6 लोग हैं, then who is supposed to complete that task, right? Then there is a confusion. But the point here says is you have to limit the copies. Some people have an unnecessary habit of including a lot of people, maybe to show off, or maybe to send every copy to their managers, maybe to send every copy to their bosses or your own boss and so on. तो कंपनीज में, कॉर्पोरेट कल्चर्स में ये बहुत कॉमन है. लोग देखते ही नहीं है, डायरेक्टली 2 में 1 2 3 4 या पूरा ग्रुप को डालते हैं, पूरा डीएल डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को 2 में डाल देते हैं. इट मे बी समथिंग वेरी पर्सनल. कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग इंसल्ट हो जाते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि लोग प्रोवोक कर रहे हैं. तो ये सब मेल गेम्स, मेल प्रोवोकेशंस, मेल वॉर्स होते रहते हैं. But what is the important to learn here? Important to learn is always limit the audience. Okay, or never copy an email to someone which is not useful also, because see, each one of us gets a lot of emails every day. So if you feel you will copy me on every mail or I will copy on every email, that will not serve the purpose. So ideally send it to only limited number of people. Don't just copy people to show off, right? कि मैं 10 लोगों को दिखा रहा हूँ ये मैंने इतना अच्छा ईमेल लिखा है, आज पहली बार लाइफ में इतना अच्छा ईमेल लिखा है. So let's show it to a lot of people. So people do this in corporate companies. People just do this, trust me. कोई अच्छा ईमेल लिखता है ना, फिर और 20 लोगों को ऐड करते हैं जस्ट दिखाने के लिए, अपने फ्रेंड्स को भी रखते हैं, बीसीसी में भी रखते हैं. These are not good practices. Professional email practices only send to someone who will have an importance for that email, right? Second point is reply all is the most dangerous button on the screen. तो कई लोगों को reply all का मीनिंग भी नहीं समझ में आता है, to be very very honest. In the corporate setting or in any setting, reply all is the most dangerous button. You should never click on it unless really needed. तो reply all करने जा रहे हो ना, तो पहले जरा सोचो 2-3 बार कि ये really needed है क्या. That most of the times you will need just the reply button. सपोज किसी ने मेल भेजा ऑफिस में कि रिप्लाई योर वोटिंग्स ऑन दिस ट्रिप ऑन दिस वीकेंड एंड इट इज बीन सेंट टू लेट्स से 50 पीपल. ओके, एंड द रेसिपिएंट वांट्स टू नो द वोटिंग फॉर हिज बॉस. तो किसी के बॉस ने बोला है उसके सबऑर्डिनेट को कि आई नीड द वोटिंग फॉर दिस वीकेंड ट्रिप, एंड ही सेंट आउट एन ईमेल टू 50 पीपल of all the people in the team to share their voting yes or no, and if their preference is yes or no. Now if you just, let's say you don't want to go to the trip, but you take it as a long-winded comment. So you start replying that I may not be able to come because of so and so, my this, that is busy, that is ill, so and so. And you do reply all. So what are you doing? You're wasting everyone's time. First of all. Second thing, you are including everyone in your personal conversation. Third thing, you are doing reply all where only reply is required. So in many of these scenarios, our default button is reply all, which is wrong. Always choose the default reply button as reply button, which means your reply will only go to the recipient. Okay, do not send reply all unless asked explicitly. But in most of the other settings, reply all is not a good idea. It's a dangerous button, especially in company settings where mails are being sent to distribution lists having more than millions of people. There are emails in big companies which are being shot out from HRs and other people, which are going to many thousands of people. In that case, reply all is a sin. You may even be punished or jailed for doing a reply all in such cases, right? Trust me. Okay, so point is clear. Point number 3, do not join email circus by adding thoughts in never-ending conversations. Okay, so this is again similar to the point that we learned in the previous slide. What was the point? The point in the previous slide was do not use super short messages or use email like a chat. Similarly, in email circus, what is email circus? Email circus is the same thing. That short messages being replied to and fro, never-ending sarcastic comments or questions on emails, and using it like a chat messenger. And on top of that, making it even bigger problem for everyone that you're using reply. Pick up the phone, use chat messenger, do one-to-one chat, one-to-one mails. The best is called don't become a part of a laughing stock. Then avoid broadcasts unless absolutely needed. तो ये थोड़ा रिप्लाई ऑल के जैसा है. ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है हम सबको पता है, आई एसओ. ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है बल्क में ईमेल भेजना. फॉर एग्जांपल रेड अलर्ट है ना, वेदर अलर्ट. तो ये कैसे मैसेज आता है गवर्नमेंट का? ऑल ऑफ अस गेट इट ऑन आवर फोन्स. इट इज लाइक अ ब्रॉडकास्ट टू 1 million people. Not 1 million people, but maybe 1 billion people. All the people who are using the phone nowadays, right? So in our settings, in office settings also, sometimes there are broadcasts, go live updates, DevOps updates, production reminders, this and that. So there are a lot of broadcasts. Don't do broadcasts unless absolutely needed. Okay, see another slide here. Unless email does following, avoid it. Most importantly, right? तो देखो email के ना कुछ purpose होता है. As I said, there are so many communication mediums nowadays. Okay,
So email has its own purpose, WhatsApp has its own, phone has its own purpose, audio and video call have their own. तो हर चीज का एक अलग अलग पर्पस, एंड यूज अप्रोप्रिएट टूल फॉर अप्रोप्रिएट पर्पस. तो ये चार चीजें मैं बताता हूँ जिसकी वजह से ईमेल का पर्पस है. इफ इट डजंट डू एनी ऑफ दीज, then typically don't use email, use anything else. Okay, imparts new information. तो ये अनाउंसमेंट ईमेल हो गई, राइट. इम्पार्ट न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई प्रोडक्ट आया है, कोई पॉलिसी आया है, राइट. देयर इज अ हॉलीडे बीइंग अनाउंस्ड, देयर इज सम न्यू प्रोडक्ट रिलीज, न्यू प्रोडक्ट testing has to be announced, anything which is imparting new information. Second point, agrees to a request. Okay, this is like something like voting buttons, I said. So let's say somebody wants a voting for you are joining a meeting or not a meeting, or you may be coming for a trip or not coming for a trip, or somebody wants to say vote her confidence for some decision. A request was asked or a question was asked and you are agreeing to it or you are responding to it. Okay, then agree to a request or respond to a question. So this is already we just covered. So if a question is being asked and you want to respond to it, yes, use an email. Don't use a chat. Then ask a question. If you want to clearly ask as a manager or even as a junior or any kind of request from, let's say, any knowledge worker, you're asking a question to a group of people, use an email. Okay. Apart from this, don't use an email. Okay. Now let's see when not to send email. तो ये देखो किस केस में नहीं भेजना चाहिए ईमेल. तो ये पढ़ो, देखो. चेंज ऑफ मीटिंग और कैंसिल एट लास्ट मिनट, डू अ फोन कॉल. The best thing is call someone. Call the most important person in the meeting. For example, suppose you have invited your senior or you have invited your boss in the meeting and you want to cancel it, at least call him. ये सर ये नहीं हो रहा है, ये कैंसिल कर रहा हूँ मैं. बाकी लोगों को मैसेज करके बता दो चलेगा, बट एटलीस्ट कॉल समवन. बट इफ यू डोंट वांट टू कॉल, एज you can just send a text message, you can send a direct message. Instant message would be better. Second point, not the best way to introduce yourself to someone. ये क्यों नहीं करना चाहिए बताओ मेल पे. देखो आप कंपनी में नए आए हो और आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना चाहते हो, राइट. इज दिस द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या आप अपने बारे में ही मेल लिख के लोगों को भेज रहे हो? ये अच्छा तरीका नहीं है, राइट. वाई? बिकॉज पीपल विल टेक यू टू बी एरोगेंट इफ यू डू दिस. उनको लगेगा अपनी बढ़ाई कर रहा है बंदा, अपनी तारीफ कर रहा है. इट्स बेटर टू पिक अप द कॉल. इट्स बेटर टू schedule a one-on-one meeting. See, if your boss is sending your welcome, that is okay. If your manager is, they typically do, managers and bosses ये करते हैं. अगर उनके टीम में कोई ज्वाइन करता है तो वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, वेलकम मेल भेजते हैं इन देयर ओन वर्ड्स, इन द एम्प्लॉइज ओन वर्ड्स. वो चलता है, बट आप खुद को ईमेल में इंट्रोड्यूस मत करो कभी भी लोगों को भेज के. वाई? बिकॉज दिस विल साउंड वेरी एरोगेंट एंड अनप्रोफेशनल फ्रॉम यू. ओके, so that's second point. Third point, don't mail when a quick phone call would do the trick. So I will not talk much about this. कई बार ऐसा होता है, देखो फिर अगेन कि फोन कॉल में जल्दी हो जाता है और आप मेल भेजोगे, फिर बंदे ने देखा नहीं, फिर वो वीडियो पोस्ट नहीं हुआ, कोई लाइव नहीं गया, कुछ और मिस हो गया. तो ऐसी चीजें जो है फोन पे कम्युनिकेट करो. छोटी सी फोन कॉल उठाओ, बात करो. नहीं उठाया बंदे ने तो मैसेज भेजो, ईमेल भेजो. बट टिपिकली पीपल विल यूज द रॉन्ग मीडियम विच इज ईमेल. ठीक है. समटाइम्स व्हाट हैपन, अ फोन कॉल वाज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड इन सच अ सिनेरियो. ओके, बट पीपल वुड जस्ट मेल एंड गो होम. कि अपना अपना क्या जाता है, मेल कर देंगे चले जाएंगे. तो फिर वो क्या हो गया, डिले हो गया, पोस्ट हो गया, किसी और ने ज्यादा काम किया, छुट्टी पे पता नहीं चला. बहुत सारे मिसकम्युनिकेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाते हैं. आपकी रैपो भी खराब हो जाती है दूसरों से. तो ये मत करो. जब फोन कॉल की नीड है तब फोन कॉल करो. नाउ रिमेंबर, नथिंग इज प्राइवेट. व्हाट डज दिस मीन? So even if you send a private mail to a private person, it is still not private. Why? Because it is stored on the server. Point number one. So in short, email is the proper proof. Okay, it can be pulled back also as needed by your service provider. It can definitely be made visible to your employer, or even in case of criminal cases, it will be made visible to police also, or even to jury. So it's such a thing. So never ever do private conversations on email. Point number one. If you want to do private conversations, pick up the phone and call the person. Okay, point number one. Point number two, don't think anything is private, even though the email may be deleted. So you may have deleted the email, the recipient may have deleted the email. It may also have been deleted from the recently deleted folder, but it is still available on server archives and it can be pulled back with one click. Point number three, do not do any theft or any unethical information on the email. If you are forwarding, let's say, office emails on your personal account, which is not allowed in any company, for example, then in that case also that can be caught easily because emails are being scanned. Now, what to avoid in the content? So, वो content के related, these are some of the good points that we should avoid. Now, first point is apologize. Never apologize on the email. First of all, apologizing in the email, no. Why? First point, the person doesn't care if you apologize in the email. सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी मेल apology से. Point number one. Point number two, you sound arrogant.
बिकॉज उनको लगता है कि इसकी हिम्मत नहीं है सामने सॉरी बोलने की, इसलिए मेल पे बोल रहा है, राइट? या कॉल करके बोल भी तो सकता था, या बोल सकती थी, मेल में क्या सॉरी बोल रहे हैं और हीरो बनने का है, ऐसा लोगों को एक गलत इंप्रेशन आता है। यू साउंड एरोगेंट। एंड पॉइंट नंबर 3 which we just read, it's a proof, right? So the someone can blackmail you in future. ठीक है, this is point number 3. And point number 4 and the last maybe is that your mood will change or you may be feeling to apologize for that moment. But आप बदल जाएंगे ना, मूड बदल जाएगा, मोमेंट बदल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बदल जाएगा। 1 6 months डाउन द लाइन आपको वो गलती लगेगी, यार यार इस बंदे को मैंने अपोलोजाइज करके गलती किया था मेल, तो वो मेल तो लेकिन रहेगा, मेल तो प्रूफ रहेगा 6 महीने के बाद भी उस बंदे के पास। आपका मूड बदल चुका है, so you have left your fingerprints and you can't undo it. Even though you delete the email, as we learned, it is still there forever. Making assumptions. ये इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बट वी टेंड टू मेक assumptions. सपोज आपको मेल आता है किसी मार्केटिंग वाले का एंड ही राइट्स, आई एम रियली होपिंग दैट यू गॉट माई लास्ट पैकेट एंड यू लाइक्ड इट एंड हाउ अबाउट प्लानिंग अ ट्रिप एंड सो ऑन, सो व्हाट डू यू फील, और आपको वो मेल मिला ही नहीं है जंक में चला गया। आप तो सामने वाला एज्यूम कर रहा है पहले से ही, सामने वाला मेल स्टार्ट कर रहा है विद दिस assumption that you already received his last email and you liked it and so and so. तो आपको क्या करना है, whenever you send second email, make a reference to your first email. तो आप बताओ, I had sent you a last email, hopefully you have read it, if not here is the content, something like this. Instead of making an assumption, clarify the message. Okay. Third point, talking about yourself. ये क्यों नहीं करना चाहिए बताओ, why you should not talk about yourself? वैसे हमने इस पे बात की है, this is about precisely about the same point, introducing yourself. Okay, so let's not do much about talk much about this. Being long-winded, yeah, no one is interested. इस पे भी बात की है हमने. Don't be fluffy. Don't write too much. Don't write stories. Don't write more than it is needed. Okay. And fifth point is humor. Email is no place for jokes. लोगों को लगता है आई एम अ गुड ह्यूमरिस्ट, और लोगों को लगता है मैं बहुत अच्छे जोक मारता हूँ या मारती हूँ, और ईमेल में तक वो लोग जोक्स भेजते हैं और सामने वाले को हंसी आने के बजाय गुस्सा आता है कि ये क्या है, मतलब क्या समझता है अपने आप। तो देखो, सामने किसी के जोक मारोगे, ह्यूमर बताओगे फोन करके, एटलीस्ट द पर्सन विल लाफ और नॉट लाफ, राइट? इफ नो वन लाफ्स एट योर जोक, देन एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि माय जोक वाज अ पुअर जोक, right? Or was no joke at all. But how will you know in an email? So absolutely for these reasons, you should not crack jokes in emails. Even if you may be a stand-up comedian, but still don't crack jokes in email. Always crack them in person. Point number 1. And for all the other reasons also, because the email is not private. Your humor may be considered as, let's say, a derogatory comment, and someone may complain for it against you. So humor, yes, do it in place, do it in person. If you want to crack jokes, yes, you can do that. But talk to people and then crack jokes. Don't send them in the email. Okay. Now, last but not the least, we learn how to use voicemail also. अभी देखो बहुत सारा voicemail का जमाना भी है, तो voicemail हम record करके रखते हैं. There is a message that we record, self-recorded message or even operator recorded message, where if you try to reach someone and the person is busy or the phone is off or in various other scenarios, the person will not ring, the ring will not come on the phone. It will directly go to the voicemail that I am busy from so and so, please leave a message. Okay, and then you record the message and keep the phone. So voicemail के भी कुछ rules होते हैं, unset rules होते हैं. So we should understand. While calling someone, always assume the other person is going to be in a meeting or busy. So you should do the following. तो कभी भी ऐसा मत समझो कि आप फ्री हो तो सामने वाला भी फ्री है. आई विल कॉल और फिर वो 1 घंटा मेरे से बात करेंगे, राइट? तो ऐसा मत एज्यूम करो कभी. फोन नहीं उठाया, वॉइस मेल में जा रहा है, देन यू शुड लीव द वॉइस मेल. तो एज्यूम करके ही चलो, आप कॉल करोगे सामने वाला बिजी होगा ही, बिकॉज सामने वाले का टाइम इंपॉर्टेंट है जिसको आप कॉल करो, तो आपको ये रेस्पेक्ट से देखना है. ओके, देन यू शुड लीव द वॉइस मेल इफ द वॉइस मेल इज टर्न्ड ऑन. तो आप क्या करोगे, मेक इट कंसाइज एंड टू द पॉइंट. तो पहले से लिख के रखो बेस्ट. अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो आप पहले से लिख के रखो, नोट करके रखो, याद करके रखो. नहीं तो वॉइस मेल आने के बाद करेंगे और क्या बोलना है, ऐसा हो जाता है. तो वॉइस मेल एक ही बार चांस मिलता है रिकॉर्ड करने का. ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड किया, डिलीट किया, रिकॉर्ड किया, डिलीट किया, फिर भेजा. वॉइस मेल गिव्स यू ओनली वन चांस टू रिकॉर्ड योर मैसेज. सो यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर एंड प्रैक्टिस ऑन दैट, राइट? यू शुड साउंड वेरी वेरी प्रोफेशनल. सो यू शुड हैव रिटन इट डाउन. वो लिख के रखा है आपने लाइन पहले से कि अगर, और ये एज्यूम करके ही चलना है कि मैं कॉल करूंगा और वो बिजी होगा ही, ये पकड़ के ही चलना है, वो बिजी होंगे ही, होगी ही. तो आपने लिख के ही रखा है पहले से, वॉइसमेल रेडी है. आप किसी को कॉल लगा रहे हो, आपको पता है कि ये वॉइसमेल पे जाने वाला है 90%, एंड देन आई एम गोइंग टू से दिस लाइन. सो यू विल साउंड वेरी कॉन्फिडेंट एंड मेक इट टू द पॉइंट. डोंट टेल योर होल स्टोरी. Just keep it concise. The other person doesn't have time to listen your 4 minutes of voicemail. You should keep it under 30 seconds ideally or 20 seconds. तो वॉइसमेल में भी रह जाएगा आपका मैसेज. अगर आप उसको स्टोरी की तरह बनाओगे ना, द पर्सन विल जस्ट स्किप इट और कैंसिल इट और डिलीट डाउन द ड्रेन, delete button. So don't do that. Don't want to end up in recycle bin, use short voice mails.
ठीक है, कंसाइज रखो, टू द पॉइंट बात करो, हूँ हाँ मत करो उसमें गाना मत गाओ, कीप इट कंसाइज। जॉट डाउन पॉइंट्स बिफोर हैंड, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लिख के रखो पहले से पॉइंट। इट इज फार बेटर व्हेन यू आर कॉलिंग समवन योर सीनियर, यू शुड हैव वेरी वेरी क्लियर पॉइंट्स रिटन डाउन। स्टेट योर नेम एंड नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट मिसिंग लिंक है, ये 99% लोग भूल जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ और ये काम था और ऐसा ऐसा था और रख दिया, अरे भाई तुम्हारा नाम बताओ, मैं बोल रहा हूँ मतलब क्या होता है राइट। तो मैं बोल रहा हूँ अपने हस्बैंड या वाइफ को बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा किसी को भी कॉल कर रहे हो, यू शुड से योर नेम, right? The person may have forgotten you, right? You may consider yourself to be the president of the country so that everyone knows you, but the other person may not, right? And especially if you're calling someone, as I said, senior or superior, you should clearly say your name, you should clearly say your contact number and also the reason of calling. ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, but that is also very important. Name, number, and reason. And if you can choose to call back at another time so that the person is aware, or you can ask the other person to call back. But ये clearly लिखिए, I am so and so. I have called you. I'm reaching at this point of time to you because of this. My number is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. If it's possible, I will try to call you back 6 p.m. in the evening. Or if it is possible, can you reach me by tomorrow before lunch? इस तरह से, and then hang up. So when the meeting is over, when the phone is over, hang up. Don't assume the other person will hang. तो क्या करते हैं, सामने वाला कट कर देगा और जेब में डाल के स्टार्ट हो गया। ऐसा मत करो, कट करो, अपनी तरफ से कट करो, राइट? बी क्लियर, बी एब्सोल्युटली क्लियर, okay, so that the phone is cut. And your voicemail should be to the point and specific. So with this, we will complete the session. Thank you so much.